Hey friends, my name is Harshit. Welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. And in this video, I'm going to cover 3 listening maps for you, and we are going to solve it together. So एक साथ हम लोग 3 maps अलग अलग solve करेंगे. I'm going to give you the instructions कि कब आपको left side जाना है, कब आपको right side जाना है, क्या instructions follow करनी है, क्या hints follow करनी है. So I always say this to my students, and I'm also telling this to you कि listening maps are the easiest things if you practice it on regular basis. सबसे इजी है 5-6 मार्क्स. आप ऐसा समझो कि आप 100% कवर कर पाओगे अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो. और आपको छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में कवर करवाई है लिसनिंग मैप्स के, वो आपको फॉलो करनी है. सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर लिसनिंग मैप. इसमें आपको दिया गया है ग्राउंड फ्लोर प्लान फॉर थिएटर, बॉक्स ऑफिस, थिएटर मैनेजर्स ऑफिस, लाइटिंग बॉक्स फॉर आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स ऑफिस. यहाँ पे डबल डोर है, यहाँ पे ABCD सब कुछ दिया गया है, वाटर कूलर, एंट्रेंस और रोड, और यहाँ पे फोयर दिया गया है. तो हमको क्या करना है, जब भी बॉक्स ऑफिस पे हमको लेके जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी पेंसिल रखनी है. वी नीड टू कीप फॉलो द इंस्ट्रक्शन. सो लेट अस सॉल्व दिस. Have some time to look at questions 7. Now, a word about the layout of the building. The auditorium, stage and dressing rooms for the actors are all below ground level. Here on the ground floor, we have most of the rooms that the public doesn't see. The majority are internal, so they have windows in the roof to light them. Standing here in the foyer, So standing here in the foyer. So हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं. अब हमको क्या करना है, यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं वो देख. in the roof to light them. मतलब ऐसा अभी तक ये इंस्ट्रक्शन गई है कि हर जो रूम है उसके ऊपर, रूफ के ऊपर एक विंडो दिया गया है तो लाइट करने के लिए. बॉक्स ऑफिस कहाँ पे लेके जा रहे हैं? Standing here in the foyer, you're probably wondering why the box office isn't here, where the public would expect to find it. उसने ये बोला यहाँ पे खड़े रहने के बाद बॉक्स ऑफिस यहाँ पे क्यों नहीं है, ऐसा आपको वंडर होगा. इसने एक हिंट दे दी कि बॉक्स ऑफिस यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ है वो देखना है. Well, you might have noticed it on your way in. Although it's part of this building, it's next door, with a separate entrance from the road. Although it is part of this building, भले ही ये इसी बिल्डिंग का पार्ट है, it is next door with a separate entrance. मतलब यहाँ खड़े रहने के बाद आपको एक वंडर होगा कि बॉक्स ऑफिस यहाँ क्यों नहीं है, जहाँ पे पब्लिक एक्सपेक्ट करेगी. यू विल प्रोबेबली वंडर दैट फैक्ट. पर अगर आपने नोट किया हो तो देर इज अ रोड से आप देखोगे तो देर इज अ सेपरेट एंट्रेंस फ्रॉम द रोड और इट इज नेक्स्ट डोर. तो हमारा आंसर क्या आएगा? जी. दैट इज व्हाट वी नीड टू राइट कि रोड से एक सेपरेट एंट्रेंस, तो एक एंट्रेंस ये हुआ और दूसरा एंट्रेंस ये हुआ, तो आपका आंसर आएगा जी. जी फॉर गोवा. For the theatre manager's office, you go across the foyer and through the double doors. Turn right, and it's the room at the end of the corridor, with the door on the left. So exactly this is how you need to follow the instructions. आपको बोला डबल डोर से बाहर जाओ, टर्न राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, रूम ऑन योर लेफ्ट. तो एंड तक जाना है, तो आपका आंसर आएगा दिस टाइम डी फॉर दिल्ली. नाउ लाइटिंग बॉक्स. The lighting box is where the computerized stage lighting is operated, and it's at the back of the building. When you're through the double doors, turn left, turn right at the water cooler, and right again at the end. It's the second room along that corridor. The lighting box. तो आपका आंसर आएगा बी. डबल डोर से लेफ्ट गए, वाटर कूलर से राइट लिया, फिर यहाँ से फिर राइट लिया. बट नाउ आई वाज वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन, यहाँ राइट लेने के बाद पहली रूम या सेकंड रूम, और उन्होंने ये बोला कि इट्स द सेकंड रूम, तो अपनी सेकंड रूम है बी फॉर बॉम्बे. सो आवर आंसर इज बी. नाउ द लास्ट आंसर, दैट इज आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स ऑफिस. Has a window into the auditorium, which of course is below us. The artistic director's office is through the double doors, turn right, and it's the first room you come to on the right-hand side. And finally, Right, so artistic director's office, again for that you need to go through the double door, turn right and turn right again, and the first room on your right. So first room right पे है F. वैसे भी G हो चुका है, D हो चुका है, तो our answer is going to be F. So these are the answers. I hope you got the idea. Now let's solve the second listening map. This is another map.
इसमें आपको दिया गया है कैंप साइट, बिजनेस सेंटर, म्यूजियम एंड कैफे। इन 4 क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना है। यहाँ पे टेनिस कोर्ट दिया गया है, यहाँ पे टी हाउस, गेस्ट हाउस, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई दिया गया है। वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव। इजी है बट अटेंशन ज्यादा रखना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज कैंप साइट। कैंप साइट का आंसर ढूंढना है कि यहाँ पे कैंप साइट कहाँ पे। And answer questions 17 to 20. During your stay here, you might want to know what there is to do. Let's turn to the plan so I can familiarize you with the layout of the park. Most tourists would choose to stay in our guest house, located in the southeast corner. It features 63 tastefully appointed guest rooms, many of which offer spectacular views of the park. You'll find a home away from home at our guest house. But for those who want to experience the natural beauty up close, there is also a campsite. When you get out of the guest house, go straight ahead, turn right at the end of the road. To your left, there is a campsite amongst the trees where you could spend a night. ओके सो 2-3 हिंट दी गई है। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, गेस्ट हाउस से स्ट्रेट जाना है, देन टर्न राइट एट द एंड। नाउ आई वाज वेटिंग कि क्या वो लेफ्ट बोल रहे हैं, बट लेफ्ट नहीं बोला। स्ट्रेट जाके आपको कहाँ जाना है, राइट जाना है। तो स्ट्रेट जाके राइट गए, ऑन योर लेफ्ट। जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैंने राइट हैंड साइड मुड़ा, मतलब कि अभी मेरा फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है और मेरा लेफ्ट क्या हुआ, तो दैट इज ई। तो मुझे आंसर मिला ई। और उसने एक और हिंट दिया कि ट्रीज के साथ है, वो सारी चीज जो है वो ट्रीज के बीच में। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड व्यू। एक बार फिर से सुनिए इसको। You get out of the guest house, go straight ahead, turn right at the end of the road. To your left, there is a campsite amongst. टू योर लेफ्ट देयर इज अ कैंप साइट, मतलब राइट जाने के बाद जैसे हम लोग इस साइड गए, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दैट इज अ कैंप साइट। सो ई इज द आंसर। अब बिजनेस सेंटर कहाँ पे, ये सुनिए। The trees, where you could spend a night under the stars together with owls and chipmunks. If you look at the top left of the plan, you will notice a picnic area. अब आपको क्या बोला, टॉप लेफ्ट। पूरे मैप में टॉप लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में हमको ये पर्टिकुलर एरिया मिलेगा, राइट। और वो क्या है, पिकनिक एरिया। हमको ये बोला गया ये पिकनिक एरिया है। हमको उससे कोई मतलब नहीं, पर अभी हमारा पूरा अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। हमको ढूंढना है बिजनेस सेंटर। कभी भी हिंट आ सकती है। लेट्स सी। If you look at the top left of the plan, you will notice a picnic area. You can either bring your own food, or we can deliver food to you. Barbecue is an option. The business center is situated directly opposite the picnic area. द बिजनेस सेंटर इज सिचुएटेड डायरेक्टली ऑपोजिट द पिकनिक एरिया। एग्जैक्टली पिकनिक एरिया के ऑपोजिट। अपना आंसर क्या होना चाहिए, ए फॉर अमेरिका। The business center is situated directly opposite the picnic area. It provides flexible, fully serviced offices, conferencing suites, meeting rooms, and is equipped with the latest multimedia facilities. Wired, as well as wireless, high-speed internet is available within the entire premises. The center is designed to cater to both individual travelers and corporate groups. Visitors can also go to the museum, which holds a vast collection that exhibits local history and a natural habitat. You start from the guest house, just turn left at the first conjunction, then walk past the tea house. Turn right, you'll see the museum after making the third right. Have you found it? Pretty easy, right? सो उसने ग्रीन हाउस से लेफ्ट बोला, देन कीप वॉकिंग पास द ट्री हाउस, मतलब ट्री हाउस को भी आपको पास करके फिर आगे निकलना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड जाने के बाद थर्ड राइट। ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट और ये थर्ड राइट। तो थर्ड राइट हुआ अपना जी। मतलब यहाँ तक आने के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट राइट बोलता तो मैं आई पे जाता, सेकंड राइट बोलता तो एफ, पर उसने बोला थर्ड राइट, सो आई हैड गॉन टू जी। जी फॉर गोवा। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज कैफे। To spend a delightful afternoon with a book and a fresh cup of coffee, you can go to the only cafe in the park. From the guest house, you go straight, then take the second right, and you'll see the cafe right in front of you. राइट। सो इस बार इसने क्या बोला, आपको गेस्ट हाउस से स्ट्रेट जाना है और फिर आपको सेकंड राइट पे मुड़ जाना है।
सो कैफे आपके एग्जैक्टली सामने रहेगा. सो द आंसर इज डी. लिसन इट वन मोर टाइम. And to spend a delightful afternoon with a book and a fresh cup of coffee, you can go to the only cafe in the park. From the guest house, you go straight, then take the second right, and you'll see the cafe right in front of you. Right, so D is the answer. So this is the second map that we have solved. Now let me help you solve another map like this only, where I'll be helping you कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. सो गाइस, अब आप ये वाला मैप देखिए. इसके अंदर आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करिए तो आपको सिर्फ दो चीजें ही दी गई है. एक आपको हाउस दिया गया है और एक आपको इंफॉर्मेशन सेंटर. दैट्स इट. तो इसका मतलब ये हुआ आपको बहुत सारे लेटर्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसमें से सिर्फ आपको चार क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं. पैरेली, मलबेरी गार्डन, शॉप एंड टी रूम. दैट मीन्स यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव अगेन, विच आई ऑलवेज से. सो आपको कितना ध्यान देना पड़ेगा आप सोचिए, क्योंकि कभी भी आंसर चेंज हो सकता है, प्लस एक आंसर पे दूसरा आंसर डिपेंडेंट हो सकता है. सो लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको अच्छे से खाली सुनना है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पैरेली. इंफॉर्मेशन सेंटर से ही हमको जाना है, क्योंकि उन्होंने एरो दिए गए हैं हम लोगों को कि कैसे कहाँ से कहाँ जाना है. सो लिसन इट केयरफुली. We're here at the information center. Follow the path marked with the arrow, and the first area you come to is the orchard on your left. तो पहला जो एरिया है वो है ऑर्चिड, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं. हमको देखना है पैरेली कहाँ पे है. As you go further down the path, there's the kitchen garden on the right. And as you go राइट साइड कोई गार्डन दिया गया है, उससे भी हमको तो पैरेली से ही मतलब है. तो जे निकल गया, आई निकल गया. round the further down the path, there's the kitchen garden on the right. And as you go round the first sharp corner, you will find to your left an area where different types of pear tree have been planted, as well as some lovely flowers. And this is known as Pear Alley. राइट. तो जो पहला बैंड है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैर्स देखने को मिलेंगे, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज पैरेली. तो हमको पहला जो आंसर मिला दैट इज एच. अब हमको कहाँ जाना है, आगे लेके जाएंगे जी एफ ई एफ हर जगह पे. लेट्स लिसन इट केयरफुली अगेन. There's some lovely flowers, and this is known as Pear Alley, designed by George himself. Next to this is the greenhouse, where some तो नेक्स्ट टू इट मतलब कि एच के बगल में जो है दैट इज ग्रीन हाउस. जी अपना ग्रीन हाउस है, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं. मलबेरी गार्डन कहाँ पे वो सुनना है. exotic plants and fruits are grown. Follow the path round the second corner, and on your right you will see the entrance to the mulberry garden. राइट. सो सेकंड टर्न जहाँ पे आया, ये पहला टर्न था, ये सेकंड टर्न है. उसके राइट हैंड साइड हमको क्या मिलेगा, मलबेरी गार्डन. सो एफ अपना मलबेरी गार्डन हो गया. अब हम लोग आगे जाएंगे ई. अब इतना एरिया बचा है ए बी सी डी एंड ई, और हाउस वाला एरिया. हमको दो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने. It's 500 year right you will see the entrance to the mulberry garden with its 500-year-old tree. Past the mulberry garden, follow the path until you reach the front of the house. I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every 2 hours. If you would like to purchase any of George's books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance, where you will find our shop, which is situated between the house and the garage, which can... ओके, हमको बोला अगर आपको कुछ परचेस करना हो तो वी हैव अ शॉप. आप उसकी साइड से निकलिए, मतलब एक साइड से हमको निकलना है हाउस से, एंड जो शॉप है वो हाउस और गराज के बीच में है. तो हाउस यहाँ पे हो गया. मान लो अगर गराज ये है तो अपना जो शॉप रहेगा वो बी रहेगा, और गराज ये है तो अपना आंसर डी बी सी पर सी भी हो सकता है. मतलब बी या सी दो में से एक अपना आंसर रहेगा शॉप के लिए. लेट्स सी, मतलब हमको आगे देखना है कि हमको हिंट मिलती जाएगी. एक बार फिर से सुनिए इसको. इसने क्या बोला, हाउस के साइड से निकलिए, हाउस और गराज के बीच में अपना शॉप है. तो अगर हाउस ये है गराज ये है तो बी या सी दोनों में से एक हो सकता है. अगर हाउस ये है गराज सी है तो बी अपना आंसर हो सकता है. find our shop, which is situated between the house and the garage, which contains the magnificent old Rolls-Royce car, which used to belong to George. I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment. Most visitors are, so why don't you visit the tea room on the far side of the garage? सो वो गैराज के फार साइड में है. इसका मतलब ये हुआ
कि सी अपना गैराज हुआ और उसके फार साइड में अपना क्या हुआ, टी रूम। तो ये टी रूम है और हाउस और गैराज के बीच में क्या है, अपना शॉप। तो आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर हमको दो चीज के बीच का लिखना है, तो बी और सी दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। सो आई वॉज श्योर कि पहले अपना आंसर बी ही रहेगा, बट फिर भी जस्ट टू बी डबल श्योर हमने क्या किया, वेट किया। उसने क्या बोला, गराज के फार साइड पे अपना, मतलब उससे भी आगे जाओगे तब आपको टी रूम मिलेगा। तो ये टी रूम हुआ, गराज ये हुआ, गराज और हाउस के बीच में अपना शॉप हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। So this is the kind of minute detail that you have to pay attention to, और फिर आप listening के जो maps है वो बहुत अच्छे से solve कर सकते हैं। So I hope you like this video. If you are new to this channel, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.